recording कर रखी. Let's discuss ray optics assignment today. Then all of you see. So mirror questions not required to do. No, sir. Okay. So we'll start from group 2, diffraction and TIR. Right? Diffraction and TIR. So question number 16. Tell me. We finish all the assignment questions today. Question number 16. Please tell me. Answer. Tell me. Already I have discussed in class. Frequency and intensity remain constant and wavelength and speed changes. Frequency and Say intensity constant. one medium to another medium. Intensity remains constant. Intensity. How? Say energy constant rules the intensity constant. Achha. Because speed of light change over, but energy changes nahi. ठीक है? Okay. चलिए हम discussion करते हैं गोटे MCQ गोटे short question. Speed of light decreases when light goes to rarer to denser. Does it mean energy decreases? No. Question number 17. Direct question. Mu is equal to 1 by IC. 1 by. 1 by sin C. Done. Yes, sir. Yes. 45 degree. Question number 45 18. degree. Question number 18. Direct question. Definition you write. It's in notes. But how it is related to refractive index. Done. What is the principle of optical fiber? TIR. Total internal reflection. Principle of optical fiber is total internal reflection. Reflection. Very common and very easy question. Right? Okay. Next, question number 20. Traveling in a medium with velocity this refracted into second medium in which it travels with velocity this. What is the refractive index of second medium? 1.5. 1.5. 1.5. Okay. What's the formula? Tell me. Direct formula. Mu is equal to C by T. Mu is equal to C by V. 1 mu 2 is equal to or mu is equal to simple C by V. Okay. Question number 21. यदि कार कोई डाउट हो मत से ब्रेक मरेबो हला मन अटकेबो मत जे तुम मन कर किसी पर्सनल डाउट थो कोतरे 21 वेवलेंथ दला इन a medium of refracting is 1.4. What the frequency? Tell me. 5 into 10 to the 15. 21 no sir, 5 into 10 to the power 15 hertz. But how? Sir, lambda is equal to sir, V is equal to C by lambda, sir, 3 into 10 to the power 8 by 5,000 and 10 to the minus. C is equal to nu lambda. What formula will use here? C is equal to Nu lambda. nu lambda. Okay. So C is given, not given, but say this first air requires mane C take 3 into 10 power 8. 8 meters per second. लैम्बडा हला 5000 तो न्यू बाहर कर दो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा 5000 c हला 3 into 10 पर 8 हले न्यू बाहर गला जो न्यू बाहरला से सेम न्यू टा अदर मीडियम रे भी हबो तो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 No, sir. No, sir. 1.4 रे किछि भी रिक्वायरमेंट नाही हला ओके देन क्वेश्चन नंबर 22. The wavelength of light in air is this. What is the wavelength of light in a medium? Which formula will use here? Tell me. The 1 mu 2 equal to lambda 1 by lambda. Lambda 1 by lambda 2. जो मैंने करी ना at least मैंने formula गुड़ा सब लिखी दो पर से तुम value पकी करियो. Okay. 1 mu 2 is equal to lambda 1 by lambda 2. 1 mu 2 होची 4 by 3
गोटे लैम्बडा देछि 7800 angstrom other lambda पचास 23 we have already done कोई न्यूमेरिकल कलाला में मझरे करथिले Yes, sir. 23 कौन थिला 23 टा Yes, sir. refractive index of glass with respect to air versus refractive index of glass with respect to water. Glass with respect to water means W mu G, right? Yes, sir. Yes, sir. W mu G. W mu G is equal to mu G by mu W. UW. Okay, what answer we get in 23? 9 by 8. 9 by 8. By 8. 24. 24. What type of lens is an air bubble inside water? Divergent. Divergent. Concave lens. Why divergent? Mu surrounding more than mu lens. Okay. Lens air bubble inside water. Inside water. Air bubble ta water bhitar achi. To mu surrounding ta kana less achi. Mu surrounding more. More ଅଛି. Mu surrounding more achi. So it Yes. divergent. When surrounding refractive index is more, then it is divergent. Already we have done. We have discussed this question. Okay. So your mic is off. Glass plate focal length. Plain glass plate focal length. How much? Say Infinite. Yes, Focal sir. length infinity power 0. 0. Yes, sir. Okay, good. Question number 26. A lens of a glass immersed in water. What is the power of its lens affected? Water degree. already done in class. Previous class हम कर साइड चेड़ा सबू. Sir, कमी जीवो. Focal length how many times increases? Increase. So 4 times. 4 4 times. times. 4 times. Times. The power कितने times है जीवा? So 1 by 1 4 by times. 1 by 4 times. So power of lens decreases and becomes 1 by 4 times. Question number 27. To concave lens, each of focal length 30 centimeter are placed in contact. What is the focal length of compound lens? Direct question. Already हमें ये वाला question कर सकते हैं. ना two concave lens देची. सर हमें करचे concave और convex करचे. Two concave देची. Two concave दिले में कौन करीबा? Direct formula 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. But f1 जगह कितना बार? Minus. So minus 30. Minus 30. Minus 30. f2 जगह So minus 30. minus 30. So finally answer कितना है? Minus 15. Minus 15 centimeter. Okay. 28. Lens emerged in a transparent liquid becomes invisible. Invisible. तुमको देखिए भी थे लेमु water tap करेंगे. Under what condition does it happen? Refractive index. The of same glass refractive is index. Same as refractive refractive index of index. glass. Refractive index of Water is equal to refractive index of glass. lens is equal to refractive index of okay liquid. Water नहीं liquid का था कुछ. Question number 29. How does focal length of lens change when red light is replaced by blue light? Already done in class. Okay. Sir, এটা থেকে explain করতে. Red light is replaced by blue light. How does the focal length change? Red light is replaced by blue light. So what happens to the wavelength? Increase or decrease? Decrease. Decreases. Decreases. Wavelength decreases. If wavelength decreases, according to Kochi, what happens to refractive index? Increases. Increases. If refractive index increases, then what happens to 1 by f? According to lens maker's formula, Increases. increases. Because 1 by f is equal to mu minus 1. See the lens maker's formula. If 1 by f mu increases, 1 by f. If 1 by f increases, what happens to the focal length? Decreases. Decreases. Got it? Have any problem? Yes, sir. Understood? Okay. Sir, 26 study को explain कर दो. 26. The lens of glass immersed in water. What is the how is the power of the lens affected?
Okay, when a lens is immersed in water, we have done the numerical, that is the focal length becomes 4 times. You're in that class or not? Okay, let's discuss that question again. 1 by f air. First, here medium change, huh? So glass refractive index, but with respect to air. And this part remains the same. 1 by R1 minus 1 by R2. The next, when it becomes water, what happens? Glass, this is with respect to water. Then this part remains same. Then you divide equation 1 and 2. If you divide, what you get then? FW by F air. Understood? Yes, sir. AG. FW by air. Only the medium change. Initially the medium was air, now the medium is water. Okay. Then A mu G minus 1 by W mu G minus 1. Then you put the values here for refractive index here. Then at last you will get FW is equal to 4 times of F. Focal length becomes 4 times. Yeah. Yes, sir. Okay, this much. But how the refractive index put? This is 3 by 2 and this is 9 by 8 or 8 by 9. What we are done at that time. Huh? नॉले टिके पूर्व वीडियो टा देखि दबो हैला जो थि बडा न्यूमेरिकल एडा लेंस मेकर्स फॉर्मूला टा थिबो लेंस मेकर्स फॉर्मूला वीडियो हैला कंप्लीटली Yes, sir. मु सेठी बोले 10 टा क्वेश्चन करैथिली ना केतरा हाउ मेनी Sir, 11 टा करो. 11 टा बहुत very important questions सेठी डिस्कशन करथिली हैला you can go through that one. Okay, Yes, see. sir. Next Sir? year, yes. Sir, ठीक है question number 27 ना answer टा कोई पर Direct 1 by f is equal to that 27, the combination of lines you are telling. What is the formula? Sir 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f is equal to, this is minus 30, this is plus minus 30. Then mathematics you do. Okay, right? Then what answer is coming? Sir, I did a mistake. Sir. Others? Now you understood what mistake? So minus The 50. calculation, I think. Actually, take it off. Next. If in doubt, then you ask me without any hesitation. 29, I think done. Red light is blue light. Okay, 30 question. Very important. Also, this one done in the lens makers class. Tell me, first figure, what's the relation between NG and NM? Sir, both are equal. So same. Both are Sir, equal. equal. No Second change. figure. Second figure. Sir, NG is greater than NM. NG is greater than NM. The less than Sir, above. NM and NM is NG greater than NG. yes, sir. NG is less than This lens is showing usual behavior or unusual behavior. Unusual behavior. Unusual. If unusual behavior, then medium refractive index will be More. more. If unusual behavior, then medium refractive index will be more. Then NM is greater than NG, right? Okay, will not do mistake further. Yes, sir. Okay, 31 then over. Then come to prism question. Question number 32. What is the cause of angular dispersion? Done in The class. different wavelength. Because different wavelength. Because angle of deviation depends on wavelength. Okay. Because angle of deviation is different for different wavelength. Right? 33. Graph. You can tell me what is the shape of the graph? Parallel line. Sir, parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Remember, this graph is not between angle of deviation and angle of incidence. Prism रे plot the graph देखला माने सबले पिला माने by default को करंती ना से angle of deviation angle of incidence graph टा कर देंगे U shape graph ना. It is read the question properly.
with its dispersive power of angular prism with a graph page. So dispersive power is independent of angular prism. So graph ta would parallel level to x-axis. 34. On what factor does the dispersive power of a material depends? Refractive index of extreme colors and Refractive. angular prism. Okay, refractive index of different colors. Okay, right, different colors. Kind of mean refractive index भी अच्छे ना, तो सब color refractive index ऊपर depend करे. Not only extreme, kind of mean भी अच्छे ना. So refractive index of the material for all colors. Why dispersion is not possible through glass slab? Can glass slab dispersion happening? Will tell me. Quick. So because opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Because incident ray and emergent ray are parallel to each other. Because incident ray and emergent ray are parallel to each other. And angle of deviation is 0. Right? Angle of deviation is equal to 0. Next. Which light deviates maximum? Violet. 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 Okay, red deviates minimum. Already we have done in notes. Why objective telescope is large aperture? To gather more light. Together Gather more. more light. To gather more light. Question number 38. First in blue, then in green. In which case the magnifying power is larger and why? 38 question. First seen in blue, then in green light through simple microscope. In which case is the magnifying power larger and why? Who can tell me the answer? Sir, in blue it will be maximum. First, which color? First, which color? Blue. First blue, then green. Why this happens? Tell me. First blue, then green. What happens then? What happens to lambda? What happens to lambda? First blue, then green. What happens to lambda? Increase or decrease? It increases. Lambda increases. If lambda increases, what happens to mu? It decreases. If mu decreases, what happens to focal length? Means 1 by f. Decreases. If 1 by f decreases, what happens to focal length? Increases. If focal length increases, what happens to the magnifying power? Decreases. It decreases. Now you see the steps. Blue is replaced by green, then the wavelength increases. Okay. Blue is replaced by green, wavelength increases. Blue, green, which is more wavelength? Sir, green. In the middle, which color is there? Yellow. So yellow. In the middle color is what? Say green. Middle color is green. This is blue. Blue is replaced by green. Okay, wavelength increases. Understood? Because wavelength gradually increases towards off. So wavelength increases. Mu decreases, 1 by f decrease, focal length increase, so magnifying power decrease. Anywhere any doubt about the relations formula? No doubt? Okay. Next. Reflection part, leave it. Diffraction and tear. Come to 2 marks questions.
How do optical fiber transmit light without significant absorption? You can explain it by what? TIR. By TIR, Multiple total tier. internal reflection. By total internal reflection. Question 11. What are optical fibers? What are optical fibers? So devices based on TIR, through which light signals are Will not transmitted. write devices, will not write. Okay. The very thin wires made up of glass or quartz. Okay. You can write it like this. Very thin wires made up of glass or quartz. Optical fiber. Right. Yes, sir. Flexible, transparent. Huh? You can write it like this also. Fiber. Very thin, flexible, transparent wires are called as optical fibers. Next. Yes. See next question. Already done. Question number 12. 90 degree, 180 degree. Any doubts? Yes. sir. Yes, sir. Okay. Question number 13. I think this question we have not done. No, sir. No, sir, not. 13 and 14 are very important questions of total internal reflection. 13 and 14 are very important questions. How will do question number 13? Who can tell me? I hope all of you have read this question properly. Samast bhala question ko padi decho. Red, green, blue, very famous question also it is. I will show you that how many times this question comes in the board examinations. Okay, many times it's a common question in the board examinations. Red, green, blue is a famous question. Okay, those who have solved this question. So we have to find the critical angle. So we have to find the critical angle of each light. We have to find out the critical angle. Okay, the critical angle. First of all, what will we find? Which color? Red color, reflective, different color, different critical angle it will be. Yes, sir. Question is like this. It's a very famous question. This is red color. This is green color. This is blue color. Okay. So red color refractive index is 1.39, I think. 1.39 red color refractive index. Tell me what will happen here. Yes. How will it solve? Yes, help me. All the rays must travel up to this much. Did you trace the rays? All the rays must travel up to this much. For all the rays, angle of incidence will be how much? So 45 degree. 45 degree. 45 degree. For all rays, angle of incidence will be 45 degree because this is 90, this is 45, 90, 45, then this is 45, so this is 45. Okay, all the rays. In this case, this is 90, so this is 45, so this is 45, 45 degree. Okay, for a different colors, we'll find the critical angle. If it is satisfied the condition that angle of incidence is greater than critical angle, then it suffers TIR. Then we will understand that it suffers TIR. Okay, right? For the relation, mu is equal to Science. mu is how much? For red So color, 1.39. 1.39 is equal to 1 by sin C. Then C is coming, then sine inverse 1 by 1.39. How much? So slightly greater than 45 degree. It is slightly greater than 45 degree. Or anybody got it? Sir, 46 degree. Sir, how? 46 degree.
So values given ଦେଇଥିବ ନା ଆମେ ଏଟା କାଢିବୁ? ନା ସେ କିଛି ବି given ନଥିବ inverse trigonometry sin inverse something The root 2 ଟା 1.414 ତ ତଳଟା ଟିକେ ବଢିଲେ sir angle ଟା ବି ଟିକେ increase। कौन करिवा तो मन भीतर गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन आसलानी हाँ जब एटा कर दबा पुणी जतले नेक्स्ट टा को जीवा ग्रीन कलर को जीवा से पुणी आथर 1.4 समथिंग अछि तो सेठी पुणी आथर बाहर करियो पूरा क्रिटिकल एंगल ता पे भी अलग क्रिटिकल एंगल ब्लू पे भी अलग क्रिटिकल एंगल ओके बट sin inverse maximum books will find if you see the solution also they are doing like this मैक्सिमम बुक्स माने भी से माने भी एम्ति कर दो छंदी और क्रिटिकल एंगल भी लिखि दो छंदी से माने बट बुक्स लिखि दो क्रिटिकल एंगल तमे भी घरे बस क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर दो बट एग्जाम हॉल इनसाइड एग्जाम हॉल हाउ विल कैलकुलेट हैं एग्जाम हॉल भीतर कैलकुलेट कर परिबो No sir। कैलकुलेट करियो बने एग्जाम हॉल भीतर रिमेंबर म तो गोटे छोटा ट्रिक्स तो वर्तमान कहूची जो ट्रिक्स रे तुम माने ए क्वेश्चन को चुटकी रे कर दो खाली गोटे क्वेश्चन नुह तुमको जदि मु एक छोटा ट्रिक टा जानिले तुम अराउंड 5-6 टा क्वेश्चन ए भरा जिते क्वेश्चन थिबो तुम सब चुटकी रे कर दो हला मन रख छोटा ट्रिक टे अछि थी जोटी कि एते कॉम्प्लिकेटेड को जीवा दरकार नै एते क्रिटिकल एंगल बाहर करबा हमर दरकार नै मैथमेटिकली भी हमर एते इंपोर्टेंस नै किछि ओके सो नाउ आई एम टेलिंग यू दैट ट्रिक ओके देखो ट्रिक टा हमर कोन मन रख समझ बहुत बड़ा जिंस केटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबडी सेम अछि केते डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री 45 तमे एमते स्टार्ट करिवो फॉर टीआर कोन कंडीशन आमी जानि छे कोन कंडीशन हां angle of I incidence greater than C। critical आई angle केते समस्त अंदर आई केते So 45 degree। 45 degree दी पटे साइन ले जाओ साइन 45 ର वैल्यू केते So 1 by root। 1 by root 2 1 by root 2 ताले मु रूट 2 कर देली रूट 2 जतिटा कर देबी रेसिप्रोकल करबी तो आकु भी रेसिप्रोकल करिया पड़िबो आ ओटा ग्रेटर देन टा लेस देन गेलो रूट 2 ର वैल्यू केते 1.414 1.41। 1.41 लेस देन 1 by sin ର फॉर्मूला कोन Sum mu of n equal। देखो हमें को कंडीशन को आनी कि मु को कंडीशन में पहुंचे देली सरला देखले केते इजी लागला सब जगह रे जोटी तम मानकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो कि नाही कोटी जे क्वेश्चन तम आसीला तम पाखकू तमे तो एम्ति कर दो तमे एंगल रो कंडीशन को आनी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडीशन में पहुंचे दो तबे तमे पाइगला त माने जो लाइट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा मोर देन 1.414 हबो सी टीआईआर सफर करिवो हला एबे टिके क्वेश्चन देखि दियो कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 रु ग्रेटर So green or blue। 1.414 रु ग्रेटर कार ग्रीन रो अकार ब्लू रो blue बट रेड रो ग्रेटर नाही राइट Yes sir। yes तो रेड विल नॉट सफर टीआईआर हला तो ये कंडीशन टा के सैटिस्फाई करूची सो ग्रीन एंड ब्लू सफर TIR right but not red चलो red टाइम के पास करी पळेला ग्रीन ब्लू दीटा को TIR हैला फेन पळे आसी फिगर also you have to draw now everybody understood Yes, sir. yes हमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रो कोनोसी रिक्वायरमेंट नै Sir, so hope all of you now understood this question but this question is a common question this is the assignment question but तम देखो जो पिला माने सेंशियल असाइनमेंट करूथिले डाउट क्लियर करूथिले भल्ला बे क्लास रे सुनुथिले से माने केते एडवांटेज पाइले ईच ईयर रे से क्वेश्चन केते थरा एग्जाम रे आसी बहुत थरा एग्जाम रे क्वेश्चन आसी से बळे क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन 12 टा जो देखुछ जेमती गोटे प्रिज्म अछि मु जो कंडीशन कहली से कंडीशन क्वेश्चन 12 रे अप्लाई हबो ओके ए जो फिगर देखुछ
1 and 2 दीटा रे देछि से फिगरडा बाय मिस्टेक ऊपर पळैछि सेटा बोधे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 रो देखो 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन फिगरटा ऊपर पळै छि बाय मिस्टेक हला देख परछो एटे रे 1 2 कहिछि रेड ग्रीन ब्लू कहनी तमे बतन पाटर पाटर आंसर कहि दबो आंगो भीतर किए टीआर हबो 1 हबो ना 2 हबो हु सफर टीआर सर सेकंड Second. सेकंड रे सफर टीआर कने सेकंड रे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टा 1.45 व्हिच इज मोर देन 1.414 माने जे की ई कंडीशन सैटिस्फाई करूछ सेकंड रे टीआर हबो बट आंसर हो जेति की कॉमन लेखाटा एति की खाली लिख दबो सेकंड रे सफर टीआर बुझिला ना कार बुझियर जे असुविधा होछ मते पचार एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखो सैंपल पेपर 2020 21 रे आस्तिला ना 2020 ना सैंपल 2020 रे आस्तिला एग्जैक्ट रेड ग्रीन ब्लू से समान क्वेश्चन टा देख परछो केते वर्ष से क्वेश्चन आसे छी बार बार से क्वेश्चन आसे छी बहुत थरा सेम क्वेश्चन टा सब बळे एग्जाम रे आसे इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ये जो प्रिज्म वाला सब देखुछ समस्त ए कंडीशन नहीं सॉल्व हेबे म तुमको जो कंडीशन देखा पुणी आथरी क्वेश्चन रे अछि केबे पड़थिला एडा दिल्ली 2009 राइट सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ना रेड ग्रीन ब्लू से 1.39 से ऐसे सैमसंग हला ओके तले हम बतन देखि देले क्वेश्चन केते थर एग्जाम रे आसी बार बार ओके समस्त भले प्रैक्टिस करिवो किछिरा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थाए जे रिपीटेड एग्जाम रे आसी क्वेश्चन नंबर 14 नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14 एटा बढ़िया क्वेश्चन रे ओके ये थरे गोटे केबे गोटे सैंपल पेपर पढितला किंतु एग्जाम रे तो आसीनी निकट भविष्य रे आसीनी बट केते बेले भी आसी पे ए देखा क्वेश्चन रे जो दिन फिगर टा क्वेश्चन नंबर 9 सैंपल पेपर 2019 देखा समस्त को Yes. Yes, sir. Yes, sir. से क्वेश्चन टा गोटे सैंपल पेपर 2019 रे थिला किंतु बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन टा अराउंड 15 इयर्स भीतर केबे पड़िनी ओके तो पड़ी जरा चांस बहुत अच्छे से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर तो समस्त मन देख से क्वेश्चन करो एटा एनसीईआरटी बॉय एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्टिक्स रो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करिवो लाइन बाय लाइन मो बस दे दी चेटे देखो सब क्वेश्चन को हम कवर कर देछि क्वेश्चन नंबर 14 ऑल ऑफ यू सी who has done this question number 14 anybody yes good anybody else all of you did this question those who understood the question please raise hand understood the question yes sir I understood but I can't able to solve okay okay right what you understood in this question please explain what you understood nothing so what is the question first start to understand उस क्वेश्चन रे कहया पूर्व तुम खाली गोटे कथा म कहूची तमे गोटे पॉन्ड रो गोटे पटे कॉर्नर रे ठिया हे की गोटे पॉन्ड समस्त बुझ परछ हला पॉन्ड सो फिश माने रुहंती तो फिश सब माछ चाष करंती पॉन्ड रो गोटे पटे कॉर्नर रे तमे ठिया हे की तम पॉन्ड सारा माछ देखि दबो पॉसिबल No, Yes, sir. sir. नो सर ताले तमे को माछ को देख परबो जे तम पाखरे थिबो हमें यस Yes. गोटे पिला कहले सर हमें सारा माछ देखि दउ जदि पॉन्ड रो वाटर टा ट्रांसपेरेंट हेतबो माने
क्लीन वाटर हेतिबो बट जदी क्लीन वाटर हेतिबो ताले सब फिश देखा जिवो नो सर No, sir. No, sir. व्हाई नो सर गोटे बेले सर रिफ्लेक्ट कर टीआईआर हे जिवो तो देखा जीवन देखो एते फिश ट्रांसपेरेंट थिले भी तुमको पॉइंट सब फिश देखा जिवोनी काहे की देखा जिवोनी सेटा ही होची क्वेश्चन टा देखो बोले समस्त बुझो गोटे कंटेनर मु नउची राइट से क्वेश्चन से गोटे बल्ब जाली छी मु भी बल्ब जाली दोची न फिश रखो जा करछ कर गोटे बल्ब मु जाली दोची गोटे बल्ब अछि एडी स्क्रीन अछि राइट एडी स्क्रीन अछि स्क्रीन को दिस इज द सरफेस एटा सरफेस टा अछि तो बल्ब टा तुमको देखा जिवो जदि बल्ब आसुथिबा लाइट रेज तम आई रे एंटर करिवो आम करेक्ट Yes, sir. तले बल्ब गोटे लाइट रे आसला सीधा आ गोटे लाइट रे आसला आ जो लाइट रे आसला देखो ए लाइट रे एमते आसला एमिट एंगल आसला जे से एमते पळेला यारे because this light is going from denser to rarer medium denser to rarer medium जाउची तो एंगल एटा ला नॉर्मल टा तो एमिते एंगल पे पडिला जेमति कि से पळेला जे पळेला तले एंगल टा की एंगल कहंती Critical angle. Critical angle. तार लेफ्ट को जो लाइट रे पड़िबो से बाहर को जिवो कान एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल तार राइट को जो लाइट रेटा पड़िबो माने जो लाइट रेटा एपर साइड रे पड़िबो एमति पड़िबो मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल मते को ता अवस्था कोन हबो इट विल कम आउट No, sir. No, sir. No, sir. इट इज सफर्स व्हाट PIR. Total internal reflection. ते रिटर्न करी पड़ेबो ता माने लाइट रे आउ एपट को बाहरिबो नाही ए लाइट रे आउ बाहर को बाहरिबोनी एपटे भी से का अवस्था क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट हला लाइट रे पड़े पड़ेला ओके तापर जो लाइट रे पड़िबो से बाहर को बाहरिबोनी एपटे जो लाइट रे पड़ला से बाहर को बाहरलानी तो मोड को लिखै देली केवल लाइट रे गोटे सर्कुलर एरिया रे बाहर को बाहर की गला लेफ्ट रे बाहरलानी कि राइट रे बाहरलानी केवल से एरिया ही लाइट रे बाहर तुम तळे जो बल्ब टे जालिबो से खाली सेति की रीजन रे ही लाइट रे बाहरिबो आउ ऊपर को लाइट रे बाहर के जीवो ना अंडरस्टैंड माय पॉइंट हला से क्वेश्चन पचे छी ए एरिया टा बाहर कर आर रेडियस टा माने कर r हबो आर हाइट टा माने कर h हबो से कहै छी से एरिया टा को तुम कैलकुलेट करो केते एरिया रे लाइट रे बाहरिबो हाउ कैन यू सॉल्व इट जदि एटा क्रिटिकल एंगल तले एटा क्रिटिकल एंगल Sir. जदि एटा क्रिटिकल एंगल तले एटा क्रिटिकल एंगल है नै Any doubt? Sir, ए जो अपन सर बुझेले सर एटा को से पॉन्ड रे एग्जांपल सहित केमते रेफर करिए सर का एग्जांपल सहित पॉइंट सहित तो यस सर सर Good. सेथरे त लाइट बाहर आसुची हां गुड देखा गोटे प्रे फिश मन कर अछि तले फिश रु एति एरिया भीतर ही फिश देरु लाइट ता बाहर को बारिबो तो यस सर तो तुम आई जदि एति एरिया भीतर जे कि तुम आईटा अछि सेही व्यू भीतर ताल तुम से फिश तो देख परिबो ता माने फिश को देखिबा पहिले तुमको फिश रा पाखु जेउ पड़िबो यस सर आ तमे पाखु गले तमे जो वाटर टा डिस्टर्ब करबो से कि फिश देर बाजिबो फिश जानि दो वेव आसीबो फिश देर बाजिबो बाजिले फिश जानि दो जे मो प्रति विपद आसलनी से सागर से पळेबो से पे फिश माने पळांती बुझिला हला यस सर तेनु केवल फिश रा ता ऊपर गोटे एरिया थिबो जो एरिया ता दूर लाइट मारो से एरिया भीतर को तुम आई गले तुम फिश को देखिबो से पे तुम गोटे ठिया है कि कॉर्नर रे पॉन्ड रो होल पॉन्ड सारा फिश को तुम देख परिबोनी हला तुम केवल ता पाखु गले ही ताको देखिबो गॉड हेल्ड फिश लाइक दिस ओके नले तुम जदी सब तुम पॉन्ड को जाई ठिया है कि सब जगह फिश को देखि दियंता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किछ नथांदा आ गोटे दिन से पॉइंट रे फिश रही थाते जा माने तुम लोभ हो जाई थांदा तुमको सब फिश देखा देली इते फिश पॉइंट रे अछंती गोटे दिन रे सब जगह पॉइंट फाका जाई थांदा बुझे तो तुमको फिश देखा जिमे तुम खाली तुम पाखरे देखा जिमे ओके दूर रे कि देखा कारण तांको दूर जो लाइट आसी से तुम आखि पजन आसीबनी हले से खाली तांको ऊपर एरिया भारिबो तो लेट्स फाइंड दिस एबे हम कैलकुलेशन करबा एटा
देखो tan c is equal to r by h. Understood? In doubt? H चला depth रा. Doubt कर रहे कि No, sir. sin c by cos c is equal to r by h. So sin c, this is 1 minus sin square c cos theta r by h. 40 sin c 1 by mu. 40 this one is 1 by mu square root over r by h. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तब सॉल्व कर दिया एलसीएम फ्रैक्शन ले जाओ को नीचे तो सॉल्व करो तो मैंने mu square minus 1 तो 1 by mu then mu square minus 1 by mu square root over is equal to r by h. So mu square तो बाहर को इसलिए mu is mu कट गला 1 by mu square minus 1 root over is equal to r by h. Implies that r is equal to h by mu square minus 1 root over. So this is the radius of the disk. If this is the radius of the disk, then what is the area? Pi r square area. So pi h square divided by mu square minus 1. Got it? Yes, sir. Then we put the values as dh mu dh number value put करके answer बात करेंगे ऐसा system. Any doubt anybody else? कार बुझे जल असुविधा होला मत पचारो. Sir, radius रा value का दरकार नहीं था. Radius ର value दरकार नहीं. Radius तो देई नथु से radius देइथलो तो सीधा एरिया बाहर पड़तांदा. देखो क्वेश्चन रेडियस दी चुकी. को जार रेडियस हम दरकार नहीं. ओके the large jar of radius 0.2 inch. हाँ jar और radius तो दरकार नहीं. Over. Should we move to the next question? पहले तो मैंने put करियो. Next question को चलो. Oh, sun seen it before it rises. I think it's 10th class question. For a short while after it says explore why. Why this happens? Due to? Sir, atmospheric refraction. Due to atmospheric diffraction. Over. 16. For which spectral colors of light is the speed maximum and minimum in glass and what in vacuum? For which color travels faster in glass? Which color? Tell me. Sir, red. Why red travels faster in glass? तमने जेतबेले ग्लास रे व्हाइट लाइट तुम इंसिडेंट करिवो तुम कहबा कथा सब कलर गुडा समान ट्रैवल करिवे ना तो रेड कलर काहे कि फास्टर ट्रैवल करिवो व्हाई will tell me Sir, lambda highest. Sir, wavelength. Sir, short wavelength. red or short wavelength Highest wavelength. longest wavelength so lambda is more the lambda more होगा ताल कौन होगा mu lambda more है mu कौन होगा Yes. mu decrease करिवो mu decrease करिगले Speed maximum is mu is equal to c by v inverse proportional तो speed बढ़ जाएगा तो lambda बढ़िले speed बढ़ेगा तो speed of red color is maximum. Okay, violet travels less in comparison to other colors. Okay,
So that's why this is also another reason why red color is chosen as the danger light. Red color गाड़ी का backlight कारण सब रेड कलर टा फास्टर ट्रैवल करिवो तमा आई रे सडन रेड कलर टा आसी पड़ जिबा आगे तो जा भी हो से 0.001 सेकंड रा डिफरेंस हो बट 0.001 सेकंड तो कार लाइफ को बंचे दी परिवो ना गोटे लाइफ को सेव कर दे पारे सेति की एक्सीडेंट केते समय रे होई कि से तो 0.001 सेकंड रे एक्सीडेंट हो जाय ना ओके तेनु रेड कलर ट्रैवल्स फास्टर स्कैटर्स लेस स्कैटरिंग हुए और फास्ट ट्रैवल करे से रेड कलर को गाड़ी का बैकलाइट बा डेंजर कलर हिसाब रे यूज करे जाय बट व्हाट इन वैक्यूम So constant. Sir, all lights have the same speed. सेम वैक्यूम रे सब कलर मान कर स्पीड हो सेम किछि चेंजेस नै राइट नेक्स्ट next question 17 lambda is given reflectivity is given in the medium okay done it's one u is equal to lambda 1 by lambda 2 that question number 18 this much high placed in front of principal focus of concave lens focal length 20 cm and the size position and nature of the image concave lens of focal length 20 cm what happened where the position concave lens remember where is the position So between focal length and optical center in the left side. object is where at the focus object is at the focus of concave lens object is at the focus of concave lens Yes, sir. where 10 cm. 10 cm is the height अरे object जदी focus रहला image कोड formation होबा Sir, 10 centimeter from optical center in the left side. 10 cm होछ object ର height टा Sir, but answer भी 10 centimeter आछि माने position of image. केमति 10 cm आसला Sir, for lens formula पके देला lens formula केमति पकेला त माने 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f yes ताबरे सर u जहाँ f से माने -20 दीटा को सब्स्टिट्यूट हो सर सेथु v बाहरिया त u जहाँ सर f से माने ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ रछे माने फोकस रछे सेति पे ऑब्जेक्ट फोकस रछी हां तो u जगह केते पुट कला सर -20 लेंस जगह सर सेम -20 okay 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f so v then is coming how much सर -10 minus minus 10 -10 cm 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f so 1 by v is as dear u is how much सर -20 minus 20 f is how much सर -20 minus 20 right yes then v f is minus 20 now concave lens what happened what happened then 1 by b is equal to 1 by this is -20 this is plus 1 by it comes to 1 by minus Pradhan sir -10 1 by 10 so b is coming -10
minus So -10. B is coming -10. The concave lens, how many cases you know? Where you should keep the object to get the image? When the object is at infinite, where the image is formed? Okay, what answer you got now? V is equal to what answer you got now? V is equal to what? -10. So where the image is formed? Where? At the same side of object? Yes, sir. At the same side of object, the image is formed, right? How is the ray diagram? This is the lens, you see. Object is at the focus. One ray comes like this. How this ray will go? Converge or diverge? Sir, diverge. Diverge. Ray will go like this. And another ray passes through optical center. That which passes through optical center goes undeviated. Understood? Okay. So you extend this now in the backward direction. Here the image is formed. Diagram is clear? The image is erect or inverted. What's the nature? Sir, erect. Image is erect. Then virtual or real? Dotted line. Virtual. Virtual. Erect virtual. And what about the size? Diminished. Size is diminished. Okay, right? Size is diminished. So this is the next question. Now move to the next question. Question number 9, 10. Thin rod. So this question is not required to do. Okay. By chance this question comes here by mistake. Okay, this mirror question. Come to question number 20. 20 question. Convex lens, concave lens. Okay, 20 question is also very good question. This type of question will get in NCERT book. NCERT book re gote jaga re 3-4टा ei bhaliya question ଦେଇଛି. Okay, ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ 3-4ଟା question के द्वारा inequality पकी करिया पड़िबो. समस्त inequality पकी करिवो and see ମୁଁ ତମକୁ suggest କରିବି you see its solution and do inequality. Hell, step by step inequality करिକି ताकू समस्त करिवो. If you will have the doubt, then you will ask me. Sir, Understood? हाँ. सेटा एक्चुअली को कहूची मु बुझी पाइलेन ଟିକେ କହିବେ. हाँ, से कहूची they use the lens equation to deduce algebraically what you know otherwise from the explicit ray diagrams. So ray diagram भी नॉल करिया पे से कहूची. But an object placed within focus of a convex lens produces virtual and enlarged image. तमाने से कहूची object ता जेतेबेले कोठ रहउची focus रे. फोकस रे रहउची. When the object is placed within focus, गोटे convex lens रो focus रहले गोटे virtual enlarged image ता होची बोली तुम prove करा. You have to prove it. Understood? Okay. सर माने बिना रे डायग्राम रे. हाँ, बिना रे डायग्राम रे तुम प्रूव करा. से बोधे कहिछि ऊपर जे रे डायग्राम करिए पे ना कोन कहिछि. Read the English and tell me. से कहिछि जा सर हमें रे डायग्राम रो पाउचे सेडा लेंस इक्वेशन यूज करके तम बाहर प्रूव करा. सेडा इनइक्वालिटी पके की प्रूव करा जिवो. खाली दीटा ऑप्शन नै एमति 3-4टा ऑप्शन देछि. हला से एग्जाम रे बेले बेले पढि जाउछि गोटे ऑप्शन को 3 मार्क लेके पढि जाउछि कि 2 मार्क लेके पढि जाउछि. हला समस्त 20 टा निजे करिवो. हला इनइक्वालिटी पके कर. इनइक्वालिटी पके करिवो. ठीक अछि? Understood? Yes, sir. Yes. Let's come to question number 21. Very, very important question.
question number 21 is a very important question. Okay, सब बेले एग्जाम रे आसे मुझे very important कोची those who are not reading at least मुझे important question कोची ता गुटे भल्ला देखि दिए कैन ऑप्टिक्स होची गुटे चैप्टर जे कि तुमको डिटरमाइन करेबा whether तमे आगुरु कहिची 3 मार्क्स क्वेश्चन गुडा केमती करछ 3 मार्क्स क्वेश्चन न पर 0 हे जिवो. Okay, 21 it's a very good question. Focal length 10 minus 10 30. Who has done this question? 21 बहुत बड़े क्वेश्चन है किंतु तीनटा लेंस तीनटा बीट 3 मार्क्स गोटे के 1 मार्क लेखे साइंस एंड सॉल्व हो देखो गोटे गोटे लेंस करि चलो बहुत इजी टा किछ असुविधा नहीं डिफिकल्ट किछ लागि माने बहुत इजी गोटे गोटे लेंस समस्त सॉल्व करि के चलो फर्स्ट लेंस यू सी फर्स्ट लेंस ता कोन थिला को मत फर्स्ट लेंस फोकल लेंथ केते थिला टेल मी plus Plus 10. प्लस 10 गोटे गोटे लेंस खाली सॉल्व करके चलो किछ डिफिकल्ट लागो 1 by v first lens you see 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Tell me u is how much kete given achi minus 30 f kete achi plus 10. plus 10 देखो v तुम केते पाइलो wait and tell me v केते असला Sir, 15 centimeter. 15 centimeter but it is the next lens दीजिए second lens को असबा हम एबे second lens एटी 1 मार्क मिली गला हमको हैला 1 मार्क ऑलरेडी हमें पाई गले एटा फर्स्ट लेंस कर दिले 1 मार्क पाई गले एमती गोटो लेंस करके कर दबो ताकि सर माने 1 मार्क दे दे चलबे कने स्प्लिट मार्क थिबो हैला एती कले 1 मार्क सेती कले सब स्प्लिट मार्क थिबो बट ए गैप ता देछि 5 सेंटीमीटर बट आर इमेज ता होछि कि केते सेंटीमीटर रे 15 रे किंतु ए गैप ता होछि 5 बुझ पाछो ए गैप ता होछि 5 बट आर इमेज होछि 15 रे ता माने आ पाखुर ऑब्जेक्ट केते फॉर्मेशन हिच 10 10 centimeter. ऑब्जेक्ट आ पाखुर 10 सेंटीमीटर माने आ पाखुर ऑब्जेक्ट ता फॉर्मेशन हिच 10 सेंटीमीटर ओके त माने जदी लेंस नथांता ट्राई टू अंडरस्टैंड लेंस नथांता त इमेज ता केते रे थांता 15 रे बुझ पाछो तो जदी लेंस नथांता त इमेज ता केते रे थांता 15 रे 15 आ पाखुर 15 रे એટલે આ પાકરું 15 মানে આ પાકરું કેતે 10 10 તમરે આર ઓબ્જેક્ટ હલા ये કના આર જે ઇમેજ આર ये होची इमेज તમરે આર होची होची वर्तमान ये हला आपे ऑब्जेक्ट आ ताकू को ऑब्जेक्ट बोली कहंती Sir, virtual. Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट छले ऑलरेडी तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट रो कांसेप्ट सब जान देछो जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म हुएनी छले वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओके तो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव नबा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते असला प्लस 10 कने 15 थिला टोटल राइट हुई पर्यंत सेतु 5 माइनस हेगला तो बंचिला प्लस 10 यू हला प्लस 10 सेंटीमीटर हला अच्छा तार फोकल लेंथ केते Minus 10 centimeter. माइनस 10 सेंटीमीटर ओके तमने तर फोकस रे वर्तमान लाइक होदुछि कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस रो गॉट इट अजि फोकस रे ऑब्जेक्ट लाइक कला तले इमेज ता कोडी फॉर्मेशन हबो आ उसका फॉर्मूला पके दरकार नै लेंस infinite इमेज इनफिनिट को पड़ेला इमेज इनफिनिट सल्ला तापर 1 मार्क मिल गेला तापर थर्ड लेंस को दिबा थर्ड लेंस ता की लेंस convex lens third lens ता convex lens से केते डिस्टेंस अछि देछि कि 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अछि बुझले अच्छा त माने आर इमेज पळैला देखो आर इमेज पळैला इनफिनिट को त माने आर ऑब्जेक्ट कोठी
infinite. infinite. अरे इमेज जब इनफिनिट को पड़ेला आर ऑब्जेक्ट हो इनफिनिट जब ऑब्जेक्ट इनफिनिट तो इमेज टा कोठी हबो आ करिया दरकार नै फोकस आ तो फोकल लेंथ केते छै 30 centimeter. Yes. केते 30 centimeter. 30 Yes, Yes, sir. sir. चला 30 centimeter now all of you understood 30 centimeters okay ये पुणे आवडे 1 मार्क 1 1 1 ठीक है देखि दे स्टेप पूरा जब किसी डाउट रहला आर जे इमेज से आपई ऑब्जेक्ट यार जे इमेज से आपई ऑब्जेक्ट आर इमेज जोड सरला तार ऑब्जेक्ट सेठ आरंभ होला आर इमेज जोड सरला तार ऑब्जेक्ट सेठ आरंभ होला बट आप जो गैप टा 5 अछि त माने सेट पे 10 होला होला सर हां टेल मी सर एटा नेसेसरी कि सर लेंस को कंबाइन करले सेटा मझिरे माने तांको डिस्टेंस मझिरे ही बनिबो सेटा नेसेसरी कि ना कोठी भी बनि पर बुझ पाइलेनी सर माने हमें लेंस कॉम्बिनेशन ला पडिचे सेतले हमें माने दीटा लेंस को जदी कंबाइन करे किछि डिस्टेंस थिबे तो सर तार इक्विवेलेंट लेंस से सेटा मझिरे फॉर्मेशन करिया जरूरी ना कोठी भी करि पारे अच्छा अच्छा ना ना हमें जो लेंस कॉम्बिनेशन रे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर्मूला देइथिले माने से तो से फोकल लेंथ फॉर्मूला नहीं करिछ बोली कहछु ना कोड ये से हम करथि जे अलगा आंसर वाले सेति में पचाले जे आंसर अलगा आसीबो कैन बिकॉज़ से फॉर्मूला टा नेग्लेक्टेड फॉर्मूला बट आमी जोटा बतन एटी कले एटा पूरा माने रियली कले एटा होची 100% करेक्ट ओके हला सेट में तमे एमति करियो गोटे गोटे करके लेंस करो इट्स एनसीईआरटी बुक एग्जांपल एटा बहुत फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक रे एग्जांपल ए क्वेश्चन भी पढी सारी एग्जाम रे गोटे प्रति वर्ष ऑप्टिक्स रो गोटे 3 मार्क के क्वेश्चन आसीबो जोटा कि पिला मानकर मुंडो खराब कर दे बट ए क्वेश्चन एते पिला मान को पई नथिला प्रॉब्लमेटिक कहीं ना पिला मान ए क्वेश्चन समस्त करंती नॉर्मली करंती सेटा एग्जाम रे पड़ला राइट द राइट पॉइंट्स केबे पड़थिला वेरी रिसेंट क्वेश्चन नंबर 4 which सर year 2019 बोर्ड रे 2019 बोर्ड रे पड़थिला पिला माने को देखि खुशी गले कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ रो डेरिवेशन पड़थिला और ए क्वेश्चन रे पड़थिला ओके तो बहुत बढ़िया हैं पिला माने देखि खुशी गले बट 2012 रे पिला माने एते खुशी हेलेनी सिमिलर क्वेश्चन पड़िला बट टिके हट के पड़ी गला देखिया को से बढ़िया किंतु टिके अलगा पड़ी गला माने उल्टा कथा पचरला टिके समस्त क्वेश्चन 20 देखला पूरा एग्जैक्ट से सिमिलर क्वेश्चन बिल मोटी करे दवा को चाहू छेटा एटी कोन पचारछि सर सेपरेशन बिटवीन L1 L2 L3 सेपरेशन बिटवीन L1 L2 L3 पचारछि ओके शी ताको उधर सेपरेशन पचारछि एटी किंतु सेठी सेपरेशन देइथिला बट एटी सेपरेशन पचारछि सेठी इमेज डिस्टेंस पचारथिला बट एटी इमेज डिस्टेंस दे देछि ए क्वेश्चन रे 2012 पिला मानकर पूरा ढाळ बाहर करला किंतु जो माने टिके एटलीस्ट जानिथिले किछि किछि पिला करि देले भलो भलो पिला माने करि देले बट 3 मार्क्स से माने 2 मार्क्स पर्यंत पळैला आ 1 मार्क करिया पे नाको टिके प्रॉब्लम हला बट जो पिला मान को कुआ आइतले जे तुम किछि नले गोटे गोटे लेंस खाली सॉल्व कर दो जदी 1 मार्क पाइ जबो किछि किछि पिला 1 मार्क पाइ गले कने फास्ट लेंस सब कर देले तुम भी सेमति करि पकाओ फास्ट 40 सेंटीमीटर लास्ट 20 सेंटीमीटर समस्तंकर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर राइट समस्त फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ओके लेट्स डू दैट क्वेश्चन do that question quick lens and lens right चलो गोटे छाड़ी छाड़ी क्या करूँ लेंस को गोटे लेंस रहला तपर आउट लेंस रहला तपर आउट लेंस रहला समस्तंकर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मते की कहबो ऑब्जेक्ट को हम प्रथम केते रखतिले 30 is it 30
Is it 30? No, 40. Image भी हिची 20 रे. तो ऑब्जेक्ट होची 40 और इमेज केतर फॉर्मेशन हिची 20 सेंटीमीटर इमेज फॉर्मेशन हिची. ओके. सो फास्ट लेंस किछि न तम ता फास्ट लेंस रो कर दियो ना 1 मार्क मिल जाओ. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. मत को v केता असला u minus 40 focal length plus 20 मत को v केता असला. Tell me. Sir, 40. V is equal to 40. V ହେଲା 40 सेंटीमीटर. ठीक আছে এদিকে গেলা সমস্তଙ୍କର. আচ্ছা 40 মানে সেই পর কোটে ফর্মেশন হবে 40. ওকে. তো ଏବେ সেকেন্ড লেন্স पे हम কিছু कर परिबानी बिकॉज़ सेकेंड लेंस रो फोकल लेंथ केवल अछि हम पाखरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाही कने आ पाखरु 40 रे फॉर्मेशन हो बट आ पाखरु केते गैप हो सेटा हम पाखरे नाही. सपोज से 80 फॉर्मेशन होला 40 एटा 40 होला बट एपुड के तमे जानि नै बिकॉज़ यू डोंट नो द सेपरेशन तो हम कर परिबानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाही इमेज डिस्टेंस नाही खाली फोकल को हम धरि बस किछि परिबानी. अच्छा किंतु थर्ड लेंस पे हिजो ना नहीं सर मे बी 40 सेंटीमीटर से सेकेंड लेंस को क्रॉस भी कर जाय पर हमें सेटा केम जानिया. गुड क्वेश्चन गुड आइडिया ओके गुड आइडिया. तो 40 सेंटीमीटर में भी लेंस को क्रॉस कर जाय पारे मे बी आरबुट को भी पळे जाय पारे. ओके बहुत भला आइडिया. ठीक है गुड. ओके से जा भी हो से टॉस कर गले भी हम किछ कर परिबानी कर परिबे किछ नो सर. सेकंड लेंस हम किछ कर परिबानी तो हम थर्ड लेंस को करबा फर्स्ट लेंस पर थर्ड लेंस हमको 1 मार्क मिल गला तपर थर्ड लेंस रे इमेज दे दिछि इमेज केते 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ केते 20 सेंटीमीटर. आउ तले बाहर करिया दरकार नै आउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकॉज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम जानि गले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम जानि गले केते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस so u is coming how much Infinite. u is equal to infinity. Okay एबे मैं सेकंड लेंस को आसबा देखो एबे मैं सेकंड लेंस को आसबा देखो सेकंड लेंस रे कोन आसला त माने यार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रे तार आदि इमेज कोठी इन्फिनिटी रे ताल सेकंड लेंस रे इमेज पाइले तो यार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तार इमेज टा इन्फिनिटी सेकंड इमेज पाइले सेकंड इमेज पाइले तार ऑब्जेक्ट कोन रहबो द फोकस ऑब्जेक्ट फोकस माने केते सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अंडरस्टूड फोकस माने 20 सेंटीमीटर. नाउ गॉट इट. ओके तीनटा को लेंस रो काम सरी गला बट हमर पाठ सरी नी एबे आरंभ वाला असल कथा तले डेटा को लेंस भीतर गैप के तेलो ना L2 भीतर 60. ओके काहे कि ना एपोड वाला 40 मींस बट आर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते असला 20 एपोड 20 सेंटीमीटर फिर 20 सेंटीमीटर असला तले व्हाट इज द गैप L1 L2 40 plus 20 is equal to केते सेंटीमीटर असला 60 सेंटीमीटर एपोड वाला 40 एपोड वाला 20 and out तो इसे सेटा जदी लेंस सेपटे फॉर्म करथांदा तो केमि 60 yes आ गोटे कैसेसिटी असला जदी सेटा लेंस रे 40 सेंटीमीटर ता सपोज लेंस रे एपटे इमेज ता हेतांता हला जदी एपटे इमेज ता हेतांता ताले कोन हेतांता ताले गैप ता केते हेतांता 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हेतांता हला जदी एपटे फॉर्मेशन हेतांता तमने 40 तमने आ पाखरु 40 ओके आ पाखरु 40 ले बट आ पाखरु 20 तमने एपटे गैप ता 20 हेतांता ओके ठीक है बट से वाज आंसर 60 आसीतला
बट आउ गोटे पॉसिबल सॉल्यूशन आसिला 20 तो जो माने 20 भी करथिले से माने भी मार्क मिलिला अंडरस्टूड अंडरस्टूड Yes, Yes. sir. Yes, sir. जे किछि न बुझि परछो सने 60 नै कि चालो किछि असुविधा नै -20 हबा कथा ना -20 डिस्टेंस डाटा एटा का -20 हम लिखो एइठी भीतर डिस्टेंस केते डिस्टेंस रे का नेगेटिव साइन दवा हला यस सर तापरे L2 L3 भीतर गैप केते आर इमेज इनफिनिट रे आर ऑब्जेक्ट इनफिनिट रे तो L2 L3 भीतर गैप केते को 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर काहे की सर काइंड ऑफ फोकस मैच आर तो इमेज इनफिनिट रे तो मन आर ऑब्जेक्ट इनफिनिट रे तो 20 सेंटीमीटर काहे सर सेटा तो केते डिस्टेंस मिले भी चलेबो गुड सही कथा 99.9% स्टूडेंट से डिस्टेंस टाको कोन लिखे बोली कंफ्यूज हेकी छाड़ देले लास्ट हैला कोन लिखे बोली कंफ्यूज हेकी छाड़ देले that can be any distance doesn't matter the answer is la distance doesn't matter काहे कि ना सेटा इनफिनिट ये तो इनफिनिट और कोन डिस्टेंस से तो कोन रिलेशन अछि understood the Yes. distance doesn't matter over this is very important question all India 2012 question बहुत पिला पूरा कंफ्यूज हो गले कौन आंसर करिए बोली ओके लेट्स रिटर्न बैक टू आवर असाइनमेंट हम कोड थिला असाइनमेंट रे कोड थिला असाइनमेंट रे Sir, 21. Sir, यस this is 28, 29, 30 सेगुडा सर को अलग सेट रे पड़थिला से टाइप रो क्वेश्चन हां तीनटा सेट रे पड़थिला से 2012 रो सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनटा सेट रे पड़थिला ओके ओके 21 सला ठीक अछि तबरे 22 ऑलरेडी डन इन क्लास पावर और लैम्बडा भितरे with the wavelength of incident light already हमने क्लास रे कर सारछे इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ माने तो समस्तंगर 23 sunglasses have no power explain why can the sunglasses which power hobani how will explain it 23 So radius of curvature of both side of lens is equal. radius of curvature of both sides is same means r1 r2 जो थिला सेटा rr हबो radius of curvature साइन कन्वेंशन तो कैंसिल हो radius of curvature टा सेम रहइबो तो 1 by f is equal to 1 mu 2 minus 1 तो 1 by r minus 1 by r right same side को रहइबो understood सर केमती टे डायग्राम में देखै देबे मैंने कॉनकेव कन्वेक्स हो एगुटे डायग्राम देखिबा टिक असुविधा तो तार अरेंजमेंट एमती ही थाए कि ताकू तार गॉगल्स गुडा करो सन ग्लासेस गुडा करो दीप टा करो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोन रहइबो सेम रहइबो हला सेम रहले तो एटा 1 by f is this is p is equal to 0 they have no power सो मैंने कॉनकेव कन्वेक्स हो कनकेवो से कन्वेक्स कनकेवो कन्वेक्स ना ना Yes, sir. कनकेवो कन्वेक्स कथा कहूछु कनकेवो कन्वेक्स कथा हेले पावर तो पळे आसीबो ना सब Concave तार convex. रेडियस समान हे पारिबो से ताकू सेमती बनै थांते से माने जेम दीटा कर रेडियस ऑफ कर्वेचर समान थाए बुझल से बडा अरेंजमेंट थां नेक्स्ट question is a within a glass slab double convex air bubble is formed how the air bubble behave glass slab रे air bubble कोन बा Diverging.
Divergent. Divergent lines. Divergent. Question number 25 we have done in class, cut into two parts. Okay, the focal length each part already have done in class. Question number 26 is a very important question. Question number 26, very important question. It's called lens displacement question. Question number 26 টা favorite question of Mother's Public School. Okay, ଯେତେବେଳେ ବି exam ହେବ ତାଙ୍କର ଏଇ question ଟା sure ପଡିବ. Everybody read it? ସମସ୍ତେ ପଢି ସାରିଥିବ, ମୁଁ explain କରିଦଉଛି. Anybody has done this question? Who has done this question? आगु कौन लेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन जदियो केबे बोर्ड एग्जाम रे आज पर्यंत आसीनी बट एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आसिले बहुत भलो होंदा. ओके, जो माने जमा आगु करे नथिबे ऑलमोस्ट केबे भी समय क्वेश्चन को अटेंड कर परिबनी. देखो से क्वेश्चन केमी मो बुझी दो तुम पढ़ी भी से क्वेश्चन बुझ परिबनी. वो बुझी दो क्वेश्चन तुमको. इट ऑब्जेक्ट अछि, इट स्क्रीन अछि. इट ऑब्जेक्ट ला, इट स्क्रीन ला, इट लेंस ला. तो जदि इट लेंस रहला इमेज टा स्क्रीन ऊपर फॉर्मेशन हला माने स्क्रीन होची इमेज. ओके, सेटा होची इमेज रो पोजीशन हो, राइट? एति बुझेला. Yes, sir. मु जदि सेई लेंस टा को एटिकी नै जिवि क्वेश्चन कोची तो भी इमेज स्क्रीन ऊपर हला, तो भी इमेज स्क्रीन ऊपर हला. त माने से कोची लेंस रो दीटा पोजीशन पाई विदाउट शिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जोड़ सेट रहला, इमेज भी जोड़ सेट हला, सेम जगह रहला. ऑब्जेक्ट फिक्स, स्क्रीन फिक्स, खाली लेंस को तुम अलग जगह नेले भी सेही ठाउरे इमेज हला. इज इट पॉसिबल? फर्स्ट टेल मी. पॉसिबल हबन हबे. Who can tell me? Quick. Yes sir, हेई पारियो. जदि पॉसिबल हे परिबो केमते पॉसिबल? Can you explain me how it is possible? सर फर्स्ट कंडीशन तो सर फोकस और कर्वेचर भीतर ऑब्जेक्ट थिबो और स्क्रीन टा बियॉन्ड कर्वेचर स्क्रीन टा थियो. तो लेंस टा आगु करले बियॉन्ड कर्वेचर रे ऑब्जेक्ट आसीबरी और फोकस और कर्वेचर रे स्क्रीन टा. Okay, good, very good. Okay, possible. A case रे ऑब्जेक्ट थिबो between F and C, इमेज हबो beyond C. ऑब्जेक्ट एटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ता बड़ा हेला, इमेज ला beyond C. बट ए केस को पळे आसला एटी ऑब्जेक्ट हे गेला beyond C, तो इमेज हे गेला between F and C. तो काहे की पॉसिबल हबनी? यस, पॉसिबल हबो. खाली कोन फरक रहबो इमेज रो? मैग्निफिकेशन खाली फरक रहबो. इन्वर्टेड हबो दीटा केस रे खाली मैग्निफिकेशन टा फरक रहबो. ओके, तो ए फर्स्ट केस रे मैग्निफिकेशन टिके बेसी हबो, ए सेकंड केस रे डॉटेड केस रे टिके मैग्निफिकेशन कमी जिवो, छोटो इमेज टा टिके हे जिवो, किंतु इमेज से सेम जगह हबो. तो इट इज पॉसिबल. से कुछ तमे तले फिजिकली तमे जानि पले कि यस पॉसिबल हबो. ताले से कुछ मैथमेटिकली भी तमे देखाओ जे पॉसिबल हबो. और दीटा पोजीशन को बाहर करो, राइट? सो लेट्स डू इट. समझते बुझी पल्ला? ए क्वेश्चन को कहते लेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन. रिमेंबर आपको कहते लेंस डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन. कार्य डाउट ले मते पछार. नाउ अंडरस्टूड? आंसर टे बुझे पारे मान जदी ऑब्जेक्ट ता जेतोले एठी लेंस थिला, ए फर्स्ट क्वेश्चन थिला, ऑब्जेक्ट ता बिटवीन एफ एंड सी थिला, तो इमेज ता कोड फॉर्मेशन होतला बियॉन्ड सी. बट जेतोले एठी लेंस पळे आसला तले एबे ऑब्जेक्ट ता कोन हिला बियॉन्ड सी रहला. यस सर. तले इमेज कोड हिला बिटवीन एफ एंड सी. एफ एंड सी. तले काई पॉसिबल हबनी? पॉसिबल हबो. से कोच त मैथमेटिकली डेटा को माने पोजीशन डेटा को आनो. देखो केमते मांगे तो जे कोनसे गोटे क्वेश्चन को नेकी चलो, आरो क्वेश्चन ता भूली जाओ, एटा दरकार नै. जे कोनसे गोटे क्वेश्चन नेकी चलो. सपोज एटा x डिस्टेंस, तांको भीतर गैप से क्वेश्चन देइछि, ता गैप देछि d, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन भीतर गैप देछि d, हेले तांको भीतर डिस्टेंस केते हला?
ए डिस्टेंस केते हला d minus minus x. x हला खाली गोटे क्वेश्चन माने सॉल्यूशन टा इजी किछि कष्ट नै खाली अंडरस्टैंडिंग ता दरकारी क्वेश्चन 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by put करो से संख्या तो सॉल्व हो तो v असला 1 by d minus x u असला minus x 1 by f then we get one quadratic equation आगुटे सिंपलीफाई करा तो मोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइबो सर जदि हमें आको फोकस रे रखिया तो इमेज इनफाइनाइट रहबो तापर इनफाइनाइट रखले फोकस रे रहबो सेटा भी तो गोटे केस हे इमेज इनफाइनाइट रहले स्क्रीन रे कोड आसीबो सर स्क्रीन टा बहुत दूर रखिया पूरा दे इनफाइनाइट ना हला केते दूर रखिया हमने हला बहुत दूर आइबो बुझलो तो सर गोटे Okay. छोटा लेंस पाई तो ने अल्प डिस्टेंस भी इनफाइनाइट ना हां जेम केते इनफाइनाइट रखिबा माने कहूछ जे ऑब्जेक्ट ता जे इनफाइनाइट रहबो इमेज ता फोकस रहबो तापर कोन करिया सर इमेज फोकस रहबो तापर यस सर तापर ऑब्जेक्ट को कर दबा इनफाइनाइट तो इमेज ता फोकस रे सो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इमेज फोकस ऑब्जेक्ट फोकस इमेज जेते इनफाइनाइट छोटा लेंस हेले भी तार इनफाइनाइट मींस तार निश्चित जदि लेंस ता 10 सेंटीमीटर हेतिबा बुझिला ने केते सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हेतिबा तापे इनफाइनाइट 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर हेतिबा हला बुझिला ठीक अछि यस सर देखो अब सॉल्व कर Yes, क्वाड्रेटिक sir. आसीबो डू इट कौन सा क्वाड्रेटिक मते को x स्क्वायर Sir, x square minus dx plus df. plus df Yes, sir. is equal to 0 understood यदि कैसे क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two solutions दुईटा सॉल्यूशन लिख दियो minus b means minus minus plus d होला plus or minus b square minus 4ac root over divided by 2a 2a means 2 into 1 2a so this is the answer so the dita question asla gote question hala x1 d plus root under d square minus 4df by 2 out x2 asibo d minus 70 root under by 2 so two questions will get okay but still question is not over the question ra तळे आउट जिंस पछतला एतिके गेला समस्तंकर तो ना नहीं यस तळे से क्वेश्चन आउट जिंस पछतला देखो समस्त देखो तळे लाइन तक पढ़ो under what condition images no image is formed को कंडीशन इमेज फॉर्म हबनी को कंडीशन इमेज फॉर्म हबनी मते को मैथमेटिकली कह दियो सर रूट भीतरटा नेगेटिव है जी हां रूट भीतर नेगेटिव हो तम डिस्क्रिमिनेंट बोले तम ताको को तो d स्क्वायर माइनस 4df टा लेस देन 0 हबो तो लेस देन 0 माने d लेस देन केते 4f तमन जदी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन भीतर गैप टा 4f रु कमी जिवो ताले इमेज फॉर्मेशन हबो नाही राइट move to the next question displacement color converging diverging lengths of equal focal length are in contact the focal length bar already we have done in class this question then 20 cm immersed in water also we have done in class lens is cut into two equal parts also done in class the lens shown in the figure made up of two transparent materials image formed will be 2 we have done in class glass sphere behave as a converging lens we have done in class 32 also we have done in class combination of lens mirror question then combination of lens mirror question okay so combination lens mirror question you leave it
Come to prism then. Prism question number 41. सर बट सेतरे किछटा क्वेश्चन अछि जोटा खाली लेंस ऊपर अछि Only सेगुड़ा lens बे छाड़ combination. दबो Yes, no, we can able to 38 do it. टा point କହିଥିଲେ कि बहुत important question. Lens question, combination of lens only where there is only combination of lens, we'll do those questions. 36 and 37 we'll do those questions in the next class. Huh? You do. Okay, good. Right? yes As well as 38 question is also very important. We'll do that. Then come to question number prism question. Explain why white light is dispersed when passing through a prism. That is already discussed. Area of white light shows no dispersion. Glass slab already discussed. Question number 43. Only formula based question. 43, 44 only proof. If in doubt, then you ask me. 45, 46, 47, these are only formula सर based questions. 43 सर sin inverse रा वैल्यू टा दे Angle of minimum deviation है ना, तो mu minus 1 whole into a तुम कर दियो. कौन सा क्या sin inverse? तो सेटा रो कर दबो ना प्रिज्म हाँ, फार्मूला ना सेटा कर दो. Mu minus 1 whole into a. yes Right? If in doubt, then you ask me. Otherwise, go to optical instrument questions. सर सेटा तो स्मॉल एंगल प्रिज्म देनी. They in small angle, but हमारे generally हमें small angle ही use करके सब लोग करीबा. बुझिले? So there is not जब data नहीं तो small angle तुम कर दिले होगा. है यस. mu minus 1 whole into a. But सेटा होची perfect answer जोड़ा कौन सा तुम माने जोड़ा हमरा not neglected वाला. Optical instrument questions 48. That m is equal to 1 plus d by f. What is the magnifying power of a focal length 10 cm, least distance distant vision dela. Okay, 1 plus d by what? Fe direct 48. 49 question you tell me. Focal length of objective and eyepiece of microscope respectively. 48 9 question. What will the answer in 49 question? 49 question here is question number 49. See, who has done 49 question? Compound microscope 2 cm 6 cm. Compound microscope, I told you earlier that any question will come, everything is hot in compound microscope. देखो अभी केमती compound microscope question करिबा minus v naught by u naught whole into 1 plus कौन थिला d by f तमे से क्वेश्चन को देखो से क्वेश्चन तुमको d तो 25 cm f तमन को देछि से u naught भी देछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि ना देनी यस सर देजी. तुमको v naught से देना थिबा केबे कोनसी क्वेश्चन v naught दबनी तुमको ये v naught ता बाहर करिया पड़े क्वेश्चन को सॉल्व कराया मन रख समझते 1 by u naught minus 1 by v naught minus u naught equal to 1 by f naught. तो v naught टा केते तुमको बाहर करिया पड़बो u naught टा केते देछि मते को क्वेश्चन टा पढि समझते सर 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ केते देछि ऑब्जेक्टिव रा 2 सेंटीमीटर. 2 centimeter. So this is minus 5 centimeter. Then this is 2 centimeter. Then v naught is coming how much? Tell me. 10 by 3.33 This fraction report 10 by 3. 10 by 3 10 by 3. Okay. Then तापर ता magnification formula रे इक्वल यूज करियो 10 by 3 u naught देछि पुट करी बाहर करियो सब बेले तुमको गोटे स्टेप करी कि v naught बाहर करी कि एक मैग्नीफाइंग पावर को जीवा पड़े और लेंथ पचर थांदा लाउरी प्रॉब्लम हे थांदा लेंथ पचर ला कोन प्रॉब्लम हे थांदा ना तुमको लेंथ पे पुनी आउ दिरा स्टेप अधिक करिया पड़ थांदा अंडरस्टूड yes ओके अब टेलीस्कोप तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम आराम से कर दे पे टेलीस्कोप रो लेंथ दे एस्ट्रोनॉमिकल कांसेप्ट टू थिन लेंसेस एंड मैग्नीफाइंग पावर 8 ओके ये जो 50 क्वेश्चन डारे से f4 plus fe देछि 36
FO by FE ଦେଇଛି 8 ହେଲେ ତମେ FO FE ବାହାର କରି ପାରିବ ନା ନାହିଁ ତମେ ସେ A plus B ଦେଇଛି A by B ଦେଇଛି A ଆଉ B ପଚାରିଛି ନା Yes, sir. algebra 51 ଟା डायरेक्ट ଦେଇଛି बट 51 क्वेश्चन टा डायरेक्ट फॉर्मूला पकी करिवो जोटे कि हम ऑलरेडी टेलीस्कोप क्लास रे कर छे माने 51 कर दे 51 भलिया क्वेश्चन कर छे बट 53 टा को हम पूरा कर दे छे टेलीस्कोप क्लास 53 कर दे ने मन पुछ ना नहीं Yes, sir. बट एबे लास्ट आसला 52 जोटे कि गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ तुम Sir, आगु sir, पाइछु 45 टारे भी हमें tell m equal to mu minus 1 into a करीब कर दो. हां हां सेटे कर दो हला Yes. जोटे हे परछु भला जो नोट न हे परछु हम नेग्लेक्ट वाला फोन कर दो 30x वाला क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो बहुत फेमस तुमको बार-बार कहछि ऑप्टिक्स रो गोटे गोटे क्वेश्चन ईच ईयर रे देखियो गोटे गोटे क्वेश्चन थिबा जोटा कि पिला मान को बहुत प्रॉब्लम रे पके देछि हला तनो 30x वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम रे पढी सारी छी आ सैंपल पेपर 2022 रो क्वेश्चन राइट तो हम सैंपल पेपर को जिबा ऑलरेडी एग्जाम रे पढी सारी छी से क्वेश्चन बट से क्वेश्चन देखो एग्जाम रे पढिया पूर्व से हिंट्स देतिला जे मु एग्जाम रे पढिबी बोली हला तो सब वर्ष पिला मान को मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोए जे एई क्वेश्चन रे एथर एग्जाम रे 100% पढिबो प्राय ईच ईयर से क्वेश्चन देखला लोग एग्जाम रे पढी था तो मते हम सार माने पछले तुम केम जानु छ इट्स वेरी सिंपल मुगल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा पूरा सजे की रखी दियो तो ऑटोमेटिकली जानि दबो सीबीएसई सेमती क्वेश्चन पकाएनी से हिंट्स दिए तुमको देखा बहुत क्वेश्चन देखै देबी ए जो 30x क्वेश्चन था सीबीएसई हिंट्स देला को वर्ष देखला सैंपल पेपर केते लेखाई सैंपल पेपर 2018. 2018 रे से हिंट्स देला तो हिंट्स देखि तापरे से एग्जाम रे पकेला तापरे एग्जाम रे पढिथिबो सेटा देखो अच्छा सैंपल पेपर 2020 रे देखो एठी सैंपल पेपर 2020 से 30x क्वेश्चन बुझछ तो से हिंट्स देला हिंट्स देखि तापरे एग्जाम रे पकेला से सेही वर्ष एग्जाम रे पकेछि से बोर्ड 2020 रे 30x क्वेश्चन राइट तो क्वेश्चन से हिंट्स दबो तापर जे एग्जाम रे पकेबो सब क्वेश्चन सेम दे ओके ठीक है लेट्स डू द सैंपल पेपर मुझे डायरेक्ट सैंपल पेपर में करा दबा तो 3 मार्क्स से थिला ना 30 क्वेश्चन दा who has done that 30x question 30x here is the 30x 3 marks रो सैंपल पेपर में तळ क्वेश्चन को टेलीस्कोप रे कर छे 2 Yes. मार्क्स एटा बर्तन 30x टा करिवे देखो 30x क्वेश्चन समझ बोले पढा 30x 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑलरेडी पढि जो मु जानि छी लेंथ 1.25 और फोकल लेंथ was 5 सेंटी दीटा फोकल लेंथ दे दीची से कहै हाउ विल सेट अप दिस compound microscope for the final image found at the least distance of distant region how will do this question मैं कथा से क्वेश्चन रे समस्त पे प्रॉब्लम कोन हुए बुझी परंदिनी समस्ते जे पछरी छि कोन सेटा को बुझी परंदिनी काना से क्लियरली देइनी जे तुम एआई या बाहर करो बोली सेटा जो क्वेश्चन प्रॉब्लम तो तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पछरी छि माने कोठी तुम ऑब्जेक्ट को रखिबो इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस से आउ कोन पछरछि से आउ पछरछि लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप केते ए डेटा एजेंसी से पछरछि एक्चुअली यू नॉट आउ एल ए डेटा एजेंसी से क्वेश्चन पछर तुमको एतिकी करिवार अछि हला तो केमते करिवो तुम ताले m इक्वल टू केते minus v naught by u naught whole into 1 plus d by if you understood देखा हम करिवा केमते एदिना पछरछि बोली बुझि परछ समस्ते माने हाउ विल सेट अप द इंस्ट्रूमेंट ता माने ऑब्जेक्ट को कोठी रखिबो ऑब्जेक्ट पाखरु केते डिस्टेंस रखिबो आ दीटा के लेंस भीतर केते माने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तुम छाड़िबो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप m केते 30 30x means 30 times magnification so minus v naught by u naught 1 plus d हला 25 f देला 5 ना केते छै फिटा 5 दिछि तो कोन दिछि रे Yes, sir. 5. ताले v naught टा केते आसला tell me is it this much v naught केते आसला Yes, sir. Yes, sir. -5 you know. -5 u naught
तापर तमे पुट कर दियो कोतरे लेंस फॉर्मूला हमको u नॉट बाहर करिया अछि माइनस v नॉट बाय u नॉट डिवाइड बाय 1 बाय f नॉट ओके तले v नॉट केते आसी अछि -5 u नॉट मोटे किछि साइन कन्वेंशन नउनी हैला बिकॉज़ इट दी थर यूज होइछि मन रखता समस्या ट्रिक ता जब से दी थर यूज हेतबो से u नॉट एठी यूज होइछि नॉट एठी यूज होइछि तब के साइन कन्वेंशन होबनी सो ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन आसीबो तले रॉन्ग मिस्टेक हेजमा तो f नॉट केते देछि 1.25 ना कोन दिखला Yes, sir. राइट Yes, sir. यू नॉट बाहर कर देखो यू नॉट केते आछि टेल मी केते आछला यू नॉट यू नॉट इज कमिंग हाउ मच सर -2 by सर -3 by 2 minus 1.5 yes sir correct all are getting this much ये गोटे Yes, sir. पार्ट चल देखो क्वेश्चन टा कोन डिफिकल्ट एथरे गोटे पार्ट चलला ओके तब पुणे तार आ गोटे पार्ट आसला आ गोटे पार्ट कोन लेंथ बाहर करे पड़ो आ तुम जान छ लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप होची v नॉट प्लस ue पढ़ा एकला थियोरी समस्या न माने थो तुम पाखे v नॉट नहीं कि ue नहीं तुम पाखे किछ नहीं पुणी ताकू बाहर करे पड़ो देखो तो क्वेश्चन टा केते हर्ष तो v नॉट केमते बाहर करबो -5 u नॉट -5 ऑलरेडी u नॉट तुम पाखे अछि -1.5 तो v नॉट आसी गला 7.5 गोटे पाइ गला ue केमते बाहर करबो ताकू बाहर करबे तुम कोन करबो ना 1 by v minus 1 by u आई लेंस रो पकाओ लेंस फॉर्मूला पकला पर v केते आसला v टा होची -25 आई पीस टा गुटिया मन पकाओ डायग्राम टाकू तो इमेज टा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर्मेशन होतला तो -25 ue बाहरिबो राइट तो fe केते fe इज 5 मते को ue केते आसला समथिंग सम गोटे 4 पॉइंट समथिंग गोटे आसबो ue टा देखो 4.17. 4.17 4.17 माइनस रास्तिबो Yes. ओके तापर लेंथ आसीगला तो 7.5 आको माइनस नबने काने मु सेत आगु मोड दिस काल तुम नै जियो बोली 4.17 so you will get 11.67 centimeter is the length of the compound very important question this is okay कितने मार्क क्वेश्चन जे पड़ हां 3 मार्क्स क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन बट एग्जाम रे केबे पढि नथले गोटिए वर्ष एग्जाम रे आसीला 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन रे ओके गोटिए वर्ष आसीला केबे आसी नथला प्रीवियस माने 15-20 इयर्स भीतर आसी नथला बोर्ड एग्जाम 2020 रे आसीला जेतेले आसी जो पिले माने करि कि जाई नथिले सेमान को 2018 रे सीबीएसई हिंट्स देला सैंपल पेपर पके कि जे क्वेश्चन हम आगु को पके को जाउची बट दे डिडंट लिसन दे सफर्ड अ लॉट ओके तो सीबीएसई रे को क्वेश्चन आसीबो ऑप्टिक्स रो बे एनी चैप्टर ताकू भी जानिबा बहुत सहज छोट छोट ट्रिक जाउ बहुत रे ट्रिक भी तुमको मु कहि दिबी तुम केमति जानिबो से भीतर अछि सब तुम माने क्वेश्चन देखले जानि परिबो 2014 सीबीएसई सैंपल पेपर रे गोटे हिंट्स देला तापर से क्वेश्चन 14 रे हिंट्स देला 16 रे हिंट्स देला तापर 18 बोर्ड परीक्षा रे पकेला 2014 रे गोटे क्वेश्चन हिंट्स देला सीबीएसई सैंपल हम देखिबो 2014 सीबीएसई सैंपल पेपर जेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज रो लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन एवडा सब 5 मार्क्स रो 2014 देखो तुम माने ये देखो 2014 जो सेकंड बिट को देखो समस्त लेंस मिरर कॉम्बिनेशन गोटे पिन वाला एटा गोटे प्रैक्टिकल भी अछि पिलावन करो से क्वेश्चन रे हिंट्स देला 2014 रे थारे कुन 2016 रे भी थारे आउथरे हिंट्स देला 2016 सैंपल पेपर से पुणे आउथरे हिंट्स देला 2016 सैंपल पेपर से क्वेश्चन पुणे हिंट्स देला पिलावन को 2016 sample paper all India convex na 2016 रे hints 2016 रे से क्वेश्चन रे
पढ़िला बट आज 1 मार्क क्वेश्चन पढ़िला 16 से 1 मार्क 14 सैंपल पर देला 16 ने 1 मार्क क्वेश्चन पढ़िला जोटा 14 सैंपल पर देला ताको 16 ने पकेला 16 ने पकेला परे से क्वेश्चन डायरेक्ट आसी गला बोर्ड एग्जामिनेशन रे पूरा त न्यूमेरिकल टा पळे आसला जोटा कि से माने पकेओ बोली आगुआ तुमको जणाई देथिला से क्वेश्चन टा जोटा कि प्राय 99.9% पिला से क्वेश्चन को अटेंड कर पेले देखो बोर्ड 2018 रे बोलो बोलो गैप देछि नै 14 रे तबे 16 रे तबे 18 रे हला 2 years gap रे ए क्वेश्चन टा एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन बट दिस इज लेंस मिरर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन टा पूरा 2018 रा पिला माने 99.9% पिला अटेंड कर पेले माने गोटे गोटे क्वेश्चन ऑप्टिक्स रे हमने पढ़ी दी जोटा कि 99.9% पिला सेही वर्ष अटेंड कर पाना दैट्स द प्रॉब्लम तो ऑप्टिक्स होचे एमते गोटे चैप्टर तुम जानि पड़थो ता न्यूमेरिकल केते इंपोर्टेंट don't leave a single question of NCERT book do all the questions all examples as well as exercise question of NCERT book okay don't think that this is additional may not come in exam सब बुक क्वेश्चन एग्जाम रे आसो एडिशनल फाइल सब को आसो तुम कहले से जोटे देखि जस्ट बिफोर एटा जे एडिशनल एक्सरसाइज रा पूरा लास्ट क्वेश्चन केबे भाबी भी नथिले के से वर्ष बोर्ड एग्जाम रे आसो 2018 रे किन से हिंट्स दे सकते लागो है ना ओके थैंक यू